सर क्वेश्चन नंबर 2 का भी फिफ्थ वाला एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? देता हूँ। सर 1.1 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। Who is this Zoom user? कौन है वो? सुन रहे हो? The fellow Zoom user. सर दियांशी शर्मा। Write your name. Write your name or roll number. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वीक किसने पूछा है? सर मैंने सर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट व्हाट हैपेंड? x plus y सर आई dx plus x minus y square plus 3 dy equal to 0. तो here m क्या है? x plus y plus 1. n क्या है? x minus y square plus 3. del m by del y हो गया 1. del n by del x भी हो गया 1. That means it is exact. It is exact. सॉल्यूशन में क्या आएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x plus y plus 1 dx y as constant n से क्या लेना है? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 dy. तीन टर्म है, n में 3 टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x, बाकी 2 टर्म है। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस 3y इक्वल टू सी। सर सिर्फ उन टर्म्स को ही नहीं लेना है सर सिर्फ जिसमें वाई x है, स्क्वायर को बाकी लेना है सब ना। टर्म्स। क्या हुआ? क्या किसने बोला है? इसने क्या बोला है? सर सिर्फ वाई स्क्वायर लेना था ना इनमें, मतलब क्यों? ओनली वाई टर्म्स। ओनली वाई टर्म्स 3 में वाई नहीं है, वाई टू द पावर 0। तो एक्चुअली वो वाई टर्म लिखा था क्या? सर एक्स जिसमें है वो नहीं लेना है, बस एक्स जिसमें मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लेना है। तो फॉर्मूला में क्या लिखा था? पढ़ोगी नहीं तो जानोगी कैसे? लिख के नहीं लोगी तो। वहां पर लिखा था y एज कांस्टेंट, यहाँ पर द टर्म ओनली दोज टर्म्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। जहां x नहीं है, जहां x नहीं है, कहाँ x नहीं है? ये दोनों टर्म में x नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर सर 1 का सिंप्लीफिकेशन कर 5 सकते। सर फर्स्ट 5 सर 1 1 का का 5 एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो dx में क्या मिलेगा, x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल dx प्लस वाई प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। Am I right? यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. m क्या है, x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल एम बाई डेल वाई क्या होगा, ये टर्म पहला टर्म 0 होगा, ये डिफरेंशिएट करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू 2y। सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। एन क्या है, y प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल एन बाई डेल एक्स विल बी व्हाट, ये टर्म 0 होगा y का, here it is x square plus y square whole square x square plus y square 1 minus 2 x into 2x। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, दिस पार्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है। दिस इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय दिस, ये था ना दिक्कत, ना इंटीग्रेशन दिक्कत है, ये मिला था, निकाल पा रहे थे। Sir, I have multiply x square plus y square to all of the terms, taking LCM. सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एलसीएम लेके करा था तो अलग आ रहा था सर, लेकिन उसमें आया सही आंसर, मतलब मिल गया एटलीस्ट एग्जैक्ट। मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करते हैं क्योंकि राइट साइड 0 है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx y as constant plus integration of any dy independent of x equal to c। So that is x minus y by x square plus y square dx y as constant। n में क्या लेना है, n में क्या लेना है, y plus x by x square plus ओनली 1। y dy, y dx कहाँ से आ गया था, हाँ वो बाद में कट जाए। ये टर्म में एक से ओनली y that is independent of x, ये इंटीग्रेशन हुआ x dx y कॉमन आ गया dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ y dy इक्वल टू c। एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला था dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला,
1 by a Tan tan inverse by x a by tan 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 inverse x by a 1 by a tan inverse tan inverse x. x by यहाँ पर plus y a का काम कर रहा है x स्क्वायर बाई 2 माइनस y इंटू 1 बाई y tan इनवर्स x बाई y प्लस y स्क्वायर बाई 2 y y कैंसिल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x बाई y इक्वल टू 6। ये मल्टीप्लाई करने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बनेगा नहीं। इफ यू टेक द एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगी फिर ऑपरेट करोगी तो ये बनेगा नहीं एग्जैक्ट। सर क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पे आई थिंक कि Yes, प्रिंटिंग sir. मिस्टेक है शायद आंसर पे। वो x स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, आंसर शुड बी x स्क्वायर प्लस ex sin y इज इक्वल्स टू 1, लेकिन आंसर पे नहीं x सर, प्लस ex sin एक्स स्क्वायर ही y। आया है सर। हाँ, x स्क्वायर आ रहा है हाँ सर। एक्स स्क्वायर है। यस सर। Hello, sir. हाँ Sir, can you please explain second bit of question number 1? ये क्वेश्चन हो गया जिसने पूछा था। yes sir बेटा डिफरेंशिएशन नहीं आने से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डिफरेंशिएशन tan y प्लस 1 dx प्लस cos x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। बताए m क्या है? Sir, m is sin x into tan y plus 1, and n is cos x into sec square y. tan y plus 1 n is cos x sec square y। del m by del y, del m by del y क्या होगा? tan y का डिफरेंशिएशन क्या है? sec square y Sir, sec square y. 1 का 0। del n by del x का क्या है? cos x का है माइनस sin x sec square y। now del m by del y is not equal to del n by del x। साइन चेंज आ रहा है। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। क्या हुआ फिर? सर, इसके आगे कैसे करना है? एग्जैक्ट तो नहीं है, आगे क्या करोगी? आगे मैंने बताया क्या? अच्छा, सॉरी, यस सर, आई गॉट इट, पता है थैंक यू। मैंने बताया था एग्जैक्ट होने से सॉल्यूशन क्या, एग्जैक्ट नहीं होने से मैंने बताया अभी तक क्या? जब बताऊंगा तब बनाओगी। सर और क्वेश्चन 1 के 5 में वो जो आपने बताया था अभी, उसमें आप पता कैसे करेंगे कि एग्जैक्ट नहीं है? वो उससे तो पता चल ही राइट जाता है। साइड जीरो है ना, वो फंक्शन का नेचर को देखो। राइट साइड जीरो है ना, राइट साइड तो जीरो है। सर एक्स जैसे हमेशा अभी भी स्क्वायर प्लस वाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, मेरा बात सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रोल कुछ रहेगा नहीं।
राइट साइड में 0 है तो एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हटा देगा, तो वो जो फंक्शन दिया गया है उसका रोल कुछ नहीं रहेगा। ऐसे एडजस्टमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं किया जाता है। ओके सर। सर 2 का 3 3 ने कहा ना था वो एक्स स्क्वायर होगा। हो गया। ओके सर। एक्स स्क्वायर e टू द पावर x sin y dx प्लस e टू द पावर x cos y dy इक्वल टू 0। तो ये में एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x sin y n है e टू द पावर x cos y। तो del m by del y क्या होगा? del m by del y e टू द पावर x cos y, del n by del x भी e टू द पावर x cos y। x में गलती क्या हुआ? अरे 2x लेने से दिक्कत क्या हुआ? क्वेश्चन तो 2x में है, देखते हैं। del m by del y इक्वल टू del n by के ये एग्जैक्ट हो गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए सर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन 2x में सर आप एक्स स्क्वायर लिखे। वो लोग बोल रहे थे ना, इसलिए 2x कर दिया। सर आंसर में x दिया हुआ है जबकि x को आना चाहिए बोल रहे हैं। देखते हैं 2x प्लस e टू द पावर x sin y dx, ये तो हो जाएगा 0 dy। और 2x का क्या है? एक्स स्क्वायर, ये होगा e टू द पावर x sin y इक्वल टू c। आंसर में क्या दिया हुआ है? x दिया सर हुआ है x x स्क्वायर की प्लस जगह। एक्स स्क्वायर e टू द पावर x sin y प्लस c। तो ये दिया हुआ है y0 इक्वल टू 5/2, तो मतलब when x इक्वल टू 0 y इज 5/2। तो ये इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस sin e टू द पावर x sin y इज इक्वल टू 1। sin 5/2 इक्वल टू c। C1 आ गया। c का वैल्यू 1 है। 1। The required solution is x square plus e to the power x sin y इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर लेने से भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर लेने से तो x³/3 हो जाएगा। सही है ये। Any more doubt? सर क्वेश्चन नंबर 2 का सर 5th बिट। क्या हुआ? सर मेरा पता नहीं क्यों एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। डिफरेंशिएशन तुझे मालूम नहीं? डिफरेंशिएशन मालूम नहीं? m है 3x स्क्वायर y प्लस 8xy स्क्वायर। Sorry sir, I can do it. Actually, I have written wrong question. Sorry. सर मेरा इससे हटके थोड़ा डाउट था
क्वेश्चन से हटके सर, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का 5 में जो बताया कि डिनोमिनेटर से अपन ऐसे कर नहीं सकते, अगर अपन एक एग्जांपल ले लें कि y को y² बाय y लिखते और y से मल्टीप्लाई कर दे, फिर कुछ अलग आएगा क्या? क्या बोल रहे हैं? मैं आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। सर, जैसा आपने बताया ना, डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं ले सकते, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट के फिफ्थ में। ये जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पर x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx बाय x² प्लस y², x² प्लस y², ये x² प्लस y² को यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई करोगी तो x² प्लस y² का रोल क्या है यार? Now you don't have the role of x² plus y², ये 0 हो जाएगा। This is different than this form। ये मैं algebraical मैनिपुलेशन में नहीं कर रहा हूँ। ये जो फंक्शनल मैनिपुलेशन हो रहा है, m dx प्लस m dy इक्वल टू 0 में mn को मैंने फंक्शन लिखा हूँ। फंक्शन का मैनिपुलेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैनिपुलेशन सेम नहीं होता है। सर, पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर तो सब तो सही हो जाएगा। फिर जब अपन x² प्लस y² को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x dx प्लस y dx, यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा। अच्छा, ये फंक्शन है, फंक्शन में इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करते हैं। वो इक्वेशन का इंपोर्टेंस को समझो। वो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन ऐसे नहीं है। जब तुम ऐसे ले रहे हो, ये हो रहा है क्या एग्जैक्ट? नो जब सर, तुम ऐसे ले रहे हो, ये एग्जैक्ट बन रहा है क्या? नो सर। तो क्यों नहीं बना? इक्वेशन सेम हो सकता है। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन सेम हो सकता है, दैट आई एग्री विद दैट। बट जो टेक्निक को अप्लाई करने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ जो dy by dx, इफ यू विल एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म, dy by dx कौन सा फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पर dy by dx कौन सा फॉर्म में आ रहा है, दैट यू मे गेट ए सम। एक रूल उससे हम कहते हैं जहां हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। रूल, मैथमेटिकल रूल, उसके some rule is said to be mathematical rule if it is true for all cases, not true for some cases। हर केस के लिए ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, सॉरी एप्लीकेबल हो रहा है तो सही है। हर जगह पे ये उनका ट्रूथ वैल्यू ट्रू निकलना चाहिए। सर, फर्स्ट का फिफ्थ में सर मैंने एक यूज करा था मेथड, एक बार आप बता देना ठीक है नहीं है आंसर निकालने के लिए। सर इसमें सर मैंने x² डिनोमिनेटर में उसमें से y² बाहर निकाल लिया था,
और फिर वो इंटीग्रेट कर दिया था पूरे को, और फिर आ गया था सर आंसर मेरा, तो मैच कर गया था। क्या किया है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप में। भेजता हूँ सर। भेज दिया सर। अच्छा है। कुछ गलत है क्या सर इसमें? सर पर ये कर नहीं सकते ना, इसने y बाय एक्स को कुछ माना होगा वेरिएबल t वगैरह, पर उधर तो उसने सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं x²/2 ये में। जो कर रहे हो, ये जो x dx को इंटीग्रेट कर दिया है, उसको फिर y बाई x dy माइनस सर y ऐसे dx नहीं कर सकते सर। x स्क्वायर टेकिंग कॉमन 1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर। ये क्या हुआ? सर इंटीग्रेट कर दिया सर, आंसर मैच कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, अब मेथड का जरूरत क्या है? इससे कर दोगी तो मेथड का जरूरत क्या है? सर पहले सर वही किया था मैंने जो सबने किया था, वो मल्टीप्लाई करके करने वाला, पर उससे एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, तो फिर ये कर दिया। गलत है। ठीक है सर। और कौन क्या पूछ रहा था? और कोई कुछ पूछेगा? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बना के बताओ। आज पढ़ा नहीं पाऊंगा, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। x dy by dx equal to 2y plus root over of x square plus y square। बना के बताओ। ये कौन सा टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करना है? सर x by y कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना होगा सर। क्या ले सकते हो? एक्स बाई वाई को हम लोग कोई वेरिएबल मान सकते हैं, जैसे u या v, वैसे करके। x by y कहाँ से है? सॉरी, y बाई एक्स, सॉरी y by y x। बाई।
ये कौन सा टेक्निक में बेटा ये सॉल्व होगा? होमोजेनियस Homogeneous में। वेरिएबल सेपरेबल में ही होगा। वेरिएबल सेपरेबल में क्यों? मैंने कहा Yes, sir, हो y जाएगा। by dx इज फंक्शन ऑफ y by x है, तो y by x को लेना है, क्या लेना है? भी लेना है। मेथड को याद नहीं रखते। यहाँ पर तो बहुत सारा मेथड आगे आएगा। 2-3 मेथड हुआ है, 2-3 मेथड को याद नहीं रख पा रहे हो, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे। सर हो गया था। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसको सही तरह से लिख के लो। ये मैंने बताया था, हाँ या ना में बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। सेपरेबल का स्पेशल केस जो है, वेरिएबल सेपरेबल का जो स्पेशल केस, ये केस बताया था, और एक केस क्या बताया था? फंक्शन ऑफ ax X plus by. सर ax to b है। प्लस सी, by प्लस सी को जेड लेने के लिए। तो यहाँ पर x डिवाइड कर देने से dy by dx क्या होता है? 2y by x। यहाँ x डिवाइड होगा तो रूटा भर के बाहर, रूटा भर का अंदर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। तो वाई बाई एक्स को भी ले जाने से हो गया मेरा प्रॉब्लम। y इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v प्लस रूटा भर 1 प्लस v स्क्वायर। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस रूटा भर ऑफ दिस। आगे फिर चलो। ये प्रॉब्लम अभी तो मैं दे रहा हूं, ये प्रॉब्लम को ट्राई करो, एग्जैक्ट में होगा क्या? एग्जैक्ट करने के लिए एम क्या होगा? एग्जैक्ट इक्वेशन माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। माइनस ऑफ 2y माइनस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एम होगा, एन होगा x। दावर शरीफ यस सर। कल रात में फोन किया था ना? यस सर। अभी तेरा एम एन का डाउट क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर, क्लियर हो गया था। दावर शरीफ या शराब? सर इट इज दावर शफक। दावर सफर। यस सर। ओके ओके। और आदित्य शराफ है, और आदित्य शराफ तो क्लास में है?
अच्छा चलो आज के लिए और नहीं कुछ है। नेक्स्ट क्लास में जो नॉन एग्जैक्ट के को सॉल्व कैसे करते हैं बताऊंगा। बुक का एक्सरसाइज कुछ करो। बुक का एग्जैक्ट इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज पकड़ो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन रहेगा। टुमारो यू डोंट हैव एनी क्लास, देयर विल बी ट्यूटर मेंटर मीटिंग। और मेरा जो मेंटी है उनके लिए मैं लिंक का टाइम भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। एट दैट टाइम ऑल ऑफ यू हैव टू जॉइन। ओके सर। कितने बजे रखेंगे? 5 बजे रखेंगे, चलेगा? Right then. I have marked Amrit. You also have marked. Yeah, so now back to the class. Let's get back to the class. So yesterday we have completed about the chromosome structures, types, how a DNA gets packed and all. So today we are going to see the division process. Okay, so let me just open my slides and share it. Yeah, please let me know if my slides are visible to you all. Yes, sir. Yes, sir, it is. Oh, before that, yeah. There is a student named Sakshi. Sakshi, are you here? Yes, sir. Yeah. I was actually looking at your image and I was thinking, are you okay? आप ठीक तो है? Yes, sir. Yeah. If you have any sort of an emotional issues, you can discuss with your friends and all. Okay. I mean, these are some sort of a signals that we usually get from depressed people and all. So that's one way of approaching. So probably I thought of asking you if you're okay, well and good. Otherwise, you can No, talk. sir, I'm good. Thank you. You're good. Okay. Well. Fine then. Let's go ahead with the class. So today we are going to study about the cell division process. So division or reproduction is one of the important criteria in sciences. Okay, not just in living things, even in non-living things also it is one of the important thing. Okay, let's say somebody has invented a mobile phone. Okay, this invention has to be reproducible. Okay, every kind of an invention has to be reproducible. So reproduction क्या होता है? You are producing the same thing again and again with what do you say? Minimal or no deviation. Okay, so that kind of a thing is called as reproduction. So in living world also we tend to see reproduction. We tend to see that the cells undergo division. Okay, so cell division, cell reproduction, both are same. So when the cells divide, you have to consider what kind of cells are dividing. Okay, number one we have prokaryotic cell and number two we have eukaryotic cell. So while the cells divide, they first thing that they do is that they form something called as a chromosome. Okay, chromosome formation तब होता है जब cell divide होना है. So when the cells are forming chromosome, you see the simplest creatures like bacteria or prokaryotes. Majority of them have only one chromosome in them. Okay, so the division is very simple because of their body type, because of their size, because of their chromosome number. सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है तो डिवीजन काफी फास्ट होता है. Okay, whereas in case of us, eukaryotes में division complex है because we have multiple number of structures called as organelles
and on top of that, our chromosomes will be more. Okay, and as the organism evolutionary status progresses, let's consider a sponge, or let's consider minute tiny creatures like your amoeba and all. Okay, you don't have a male and female in amoeba and all, or euglena and all. Okay, whereas take us human beings, we have a male and female, so our chromosomes are much segregated, and now we have sex chromosomes also. So the complexity has been increasing as we are advancing, or as we are evolving. So the reproduction process is also equally complex as we evolve. Okay, it's simple in case of prokaryotes and it's complex in case of eukaryotes. Okay, and again the division is now different with respect to different cell types. Okay, so we have some of the cells which will be taking part in only sexual activities. We call them as gametes. Okay, so gametes form होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका क्रोमोसोम नंबर को आधा करना पड़ेगा. You have to have your gamete with only one set out of one pair. You just have to have only one set, okay, of chromosome, and so these cells will be forming something called as your sexual cells. So the process is called meiosis. And in case of other cells, the rest of the cells of our body will be doing different other physical and physiological functions. So in them, the division is different because they carry two sets of chromosomes every time, and they reproduce the cells with same number of chromosomes, and hence the process is mitosis. Meiosis stands with respect to the chromosome numbers. Okay, ये mitosis क्या होता है? Mitosis stands for same thread. Okay, usually the term mitosis indicates same amount of thread. Now we are talking about a thread. What is this thread? This is nothing but our chromatin. Okay, so if you have 46 chromosomes, the same 46 chromosomes appear in the daughter cells also, and hence the process is mitosis. In meiosis means half or reduced thread. Okay, half thread. So in meiosis, what we are doing, we are just carrying only one set out of the pair, and hence that develops into a sexual form of cell or sexual cell. Okay, in case of males, it's a sperm. In case of females, it's an egg or ova. Okay, so this is the basic introduction. Now let's move on to the simplest type of reproduction. Okay, the simplest type of reproduction you will ever see will be found in the prokaryotic cell. Why? Because the cell is very small, the contents of the cell are also very less, and your DNA is also small, and the DNA will be forming in majority of the cases, the DNA will be forming only one chromosome. Okay, so we call the process as binary fission. Binary fission is again kind of a vegetative or asexual method of reproduction. Okay, we have again two formats of reproduction. One is asexual, and the other one is sexual. Okay, asexual and sexual indicates two different types of reproductions. हमारा बॉडी के केस में दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है. One is asexual and the other one is sexual. Asexual reproduction is required for growth and development of different kinds of cells of our body except your sperms. Okay, for example, let's consider our hair. हमारा hair growth होने के लिए you don't have to have the sexual cells. Okay, same way your skin. Let's consider the skin. Every day our skin sheds and a new skin forms. So for the new skin cells to form, they don't have to undergo so-called sexual methods. Same way we have our blood. Every day the blood keeps regenerating. Okay, so all the organs and organ system, majority of the organ and organ systems in our body undergo asexual method of reproduction. So in nature, if you are going to compete between sexual and asexual methods, asexual method dominates. Okay, sexual methods is required for us only to produce a completely new baby. In case of human beings like us, in case of higher creatures like us, we undergo sexual reproduction to just generate the so-called baby. So in this case, what we are doing, we are fusing our sexual gametes, or we are fusing our sexual cells, and this fusion will be creating a cell called as zygote, and from the zygote will develop a completely new baby, and we are going to get our offspring. Okay, so for that purpose, you have to participate in sexual reproduction process. Okay, so this way we have two different methods. The highest method that we follow in our life is asexual method. Okay, not the sexual method.
Asexual method, daily we undergo that. Sexual method, once we become mature, once we become adult, and once we want to produce the offsprings, then only we go for that. Okay. So this is about the basics of your reproduction. So binary fusion is a kind of an asexual method of reproduction. Okay. So what happens in a bacterial division is, number one, as soon as the bacteria forms, जब आपका bacteria नया bacterial cell बनता है, the first thing that the bacteria do is to grow. Now, what kind of growth are we talking about? The size, the dimensions. Okay. So the bacteria grows. Very, very good. Now you don't see the bacteria growing indefinitely, right? हम bacteria को हमारा आँख से नहीं देख पाएंगे. We are not able to see with our naked eye. Why? Can somebody mention why the bacteria is not growing till this state? Yeah, meat. Meat, you can say. Meat is not able to speak. कोई बात नहीं. I'll just give you a simple example. This has some physical component. Okay. Let's consider a balloon, a small balloon. Okay, which is small. Now blow air. As you keep blowing air into the balloon will be growing, right? So the dimensions of the balloon are increasing. Well, very good. The balloon is growing. Now let's keep on putting more and more air. At some point of time, the balloon will not be able to bear the internal pressure, okay, because it exceeds the outward pressure, and the so-called the material of the balloon has a limit. So once the pressure limit is crossed, the balloon will be bursting out, right? That's a very simple physical experiment that we can do. The same thing can happen to our living cells also. Okay, we can't grow indefinitely. The cells can't grow indefinitely. They have a threshold. They have a limit. Okay, and what is this limit that we are talking about? We are actually talking about the hydraulic pressures. Okay, inside our cells, the cell is actually made up of, majority of the cell is made up of water. So we have more amount of water in it. Okay, as we keep on adding contents to the cell, and as the cell grows in size, the water content also increases, and we are going to have a different kind of pressure coming from inside, and that pressure is limited. The membrane bearing capacity is limited. Okay, so if this limitation is exceeded, the membrane breaks. Just like the way the balloon bursted out, the cell can burst out and the cell can die. So we should avoid that, and for that purpose, the bacteria will be growing definitely. It grows up to a particular shape and a size, and after that it stops. Okay, once the bacteria understands that it has attained this particular shape and a size, now the bacteria starts to double its contents. Okay, so what is the first thing that it has to double? The DNA. Okay, the DNA has to get doubled. So we have to make a copy of the DNA. The process is called as replication. The process is called replication. So in replication, what we have to do, we have to prepare a DNA which looks exactly where both the DNA looks exactly same. They have to look like the copies. Okay, so how do we do that? We have a process called as DNA replication. So this is the single chromosome that I was talking about. In prokaryotes, the chromosome takes a shape of a circle. Okay, we have a circular chromosome. Now on this chromosome, we have a beginning point from where the replication starts, and we call this point as ORI. O-R-I. Okay, the point from where the DNA starts to divide is called as ORI. O-R-I. तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? हम हमारा DNA का जो डबल चेन है, वो चेन कैसे फॉर्म हो गया है? That has formed because of the complementary bases, right? Hydrogen interactions. Now we are introducing certain enzymes to widen them up or to break them out. So we are now segregating them. So we are simply unzipping our DNA. You can see in this picture, now we are breaking the bonds and we are unzipping our DNA. So we are unzipping our DNA from both the sides. As you can see in the figure, we are doing it from both the sides. So when we are doing that from both the sides, simultaneously matlab immediately, as soon as they got opened up, the starting material comes in. Okay, what is the starting material? This is the primer. This is the starter required to begin the process of copying or begin the process of replicating.
Okay, we call it as primer. So once you add a primer, you have to understand certain conditions. This is a DNA molecule, right? And on the DNA molecule, the base pairing happens only when the sugars are of opposite orientation. Okay, original DNA molecule में भी देख लीजिए, sugars का orientation देख लीजिए, they are 5 and 3 opposite, same way. Okay, so the primers also get added in this 5 and 3 complementarity. Good, but another condition gets applied. What is the another condition? Look at the synthesis pattern of the DNA. It every time goes from the direction of 5 to 3. Every time, every single time when a given DNA molecule is formed, the direction of synthesis is 5 to 3. Okay, so we are beginning our 5th position with respect to the 3rd position available here, and we are starting the division copying process or replicating process. So how do we do that? We add a starter. The starter is called as primer. Okay, same way on the opposite chain also, we look for the 3rd position. Here the 3rd position is not free, so we straight away start with the available 3rd position. So we start straight away here. यहाँ पे हम हमारा starter को add कर दिया है. So for addition of this primer, you require an enzyme called primase. We require an enzyme called primase. Remember the names of the enzymes. I'll repeat it again. Primase, that's number 1. So primase, what does the primase do? Primase fixes your primer to the original DNA chain, okay, at the complementary sites. So what is the complementary site of the parent? It should be 3'. Here also it should be 3'. Okay, and our new chain is starting from 5. So 5 and 3 pairing has happened here, 5 and 3 pairing has happened here also. Good. Now the synthesis goes. So how does the synthesis goes? We are now introducing an enzyme called DNA polymerase. Okay, the name is simple. DNA polymerase. Polymerase का role क्या होता है? It builds a polymer. So what kind of polymer are we building? We are building a DNA polymer, and hence the name is DNA polymerase. Okay, so what does this DNA polymerase do? ये जो primer का जो edge है, वहां से वो extend करेगा. It starts to add on the new bases depending upon the complementary base available here. For example, if you have an A here, automatically we are going to add T. If you had G here, we will be adding C. If you have C here, we will be adding G. So this way, we are going to add our complementary bases. Okay, the DNA is going to add the complementary bases, and it's going to build the polymer. So in this chain, you see this particular location is looking like a fork, exactly like a fork. Okay, we have unzipped the DNA, we have added the primers, and we have started to synthesize. So this area is looking like a fork, and hence we call this entire region as a replication fork. The same thing is mentioned in the figure. You can see we have one replication fork here, and we have another replication fork here. Okay, and as we extend the replication forks, we tend to see the formation of a bubble-like structure. So we call this bubble as replication bubble. Okay, we call this structure as replication bubble. Replication, replica, you are making a copy. So the terminology is simple English. You just have to remember the terms. Okay, origin of replication, we are calling it as ori, followed by replication fork, followed by replication bubble. Okay, so when the bubble is getting extended, you have to observe one phenomenon. Okay, what is the phenomenon that you have to observe? You see on one of the chain, as you have a free site to synthesize, the DNA chain is getting synthesized continuously. Okay, यहाँ पे जो direction है, it is not getting any obstruction. So यहाँ पे synthesis आराम से जा रहा है. But look at the opposite chain. Opposite chain has, as we keep on unzipping, we have free set of 3. We have 3 free set available here. So इसके वजह से क्या हो रहा है? हमारा synthesis जो हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो गया है, नीचे की तरह जाएगा, because the direction is from 5 to 3. So it starts at 5, it goes to 3, and it ends abruptly because we don't have no more DNA available here. You don't have no more complementary chains available here. So यहाँ पे stop हो गया है. Again, when we unzip it, फिर से यहाँ से शुरू होगा. We are adding one more primer here. We proceed ahead. Again, we stop here abruptly because we already have a synthesis chain here. So this way, one of the chain gets synthesized completely because the direction of synthesis has no obstruction, and
this is going in the direction of opening of the DNA. Okay, but other chain is going in an opposite direction, and because of non-availability of this 3 site on this chain, you have to synthesize the DNA in short segments. Okay, so this way at the end of the process, when we synthesize the entire DNAs, this is continuous, it is complete, and we call it as leading chain or leading strand. But look at this fellow, this is discontinuous. You have multiple segments located here. Okay, and till here you have several breaks. So now these segments are recognized by a scientist called Okazaki, and hence we are calling them as Okazaki fragments. Okay, Okazaki fragments determine this discontinuous banding. Now, people, this is very crucial part. You have to understand why one is continuous and why other one is discontinuous. Okay, it's because of the base pairing and it's because of the directionality. Base pairing rule के हिसाब से आपका original chain में 3' set की जरूरी है. Okay, then only the direction of synthesis of the new chain starts from 5. Okay, so यहाँ पे 3' set free था, and हमारा जो chain का opening जो हो रहा है, that's happening in its favor. So this is going in a straight manner, in a continuous manner. लेकिन opposite chain जो है वहां पे हमारा 3' set free नहीं है. It's getting free at intervals, regular intervals. As we keep unzipping the DNA or as we keep opening the DNA, we are getting it free. So wherever the free site is available, from there the synthesis is happening, and it's going in a direction which is opposite to opening of the DNA. So अगर हम यहाँ से open कर रहे हैं तो उसका synthesis ऐसे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको intermittent breaks मिल रहा है. Okay, so here we are ending abruptly. Again here we are ending with one segment abruptly. We end one more with abruptly. Like this we are ending with different segments. So this is discontinuous and this is continuous. So this has delayed our replication process, and so we call it as lagging chain. Okay, now onto this chain, what we can do? Now onto this chain, what we can do is that we can add an enzyme called as DNA ligase. Okay, so DNA ligase, this is the third enzyme. What does it do? It will be looking for these gaps. So these two are big polymers of DNA, right? This is one segment and this is the other segment. So ligase का काम क्या होता है nature में? Nature in the sense in all the chemistry or physical or biological aspects, ligases are required to join polymers. Okay, any kind of a polymer, you just take any kind of a polymer and specific ligases can be used to join them. So this is kind of a sticking element. So what we are doing here is we are combining both of them. So how do we combine? We introduce the base. यहाँ पे एक base होगा, right? So ये base के हिसाब से या ये bases के हिसाब से हम यहाँ पे extra bases add करेंगे. And when we add the bases, this ligase establishes the chain. So how is the chain established here? By phosphodiester linkages. So it links these two, and it will be connecting by hydrogen interactions to this chain. Okay, so in this manner, all whatever the areas are there, all of these areas gets sealed up, and we are making it continuous. Okay, so once this is done, Sir. yes. Sir, please explain again how shall we fill those gaps? We have an enzyme called as DNA ligase. एक enzyme का नाम ligase है. Okay, so the ligase का job क्या होता है? Wherever the DNA polymers are having the gaps, it goes, it finds the gaps and it fills them up, and it sticks these two DNAs together. यहाँ पे हमारा, for example, let's say you have a AC here. ये हमारा parent strand में A और C है. तो A से कौन bind करेगा? T bind करेगा, and C से कौन bind करेगा? G bind करेगा. So it will pull out A, T and G, and it will make this chain continuous by adding all the phosphodiester linkages. Okay, so you have a complementary basing established here, and you have a bridge also established here. So this way we are making our discontinuous DNA continuous now. Okay, now good. Now we have two newly synthesized chains. Now tell me, according to the complementary rule, this chain and this chain sequences are never same, right? इसका sequence और इसका sequence कभी भी same नहीं होगा. They are complementary. Okay, मुझे
एग्जैक्ट इसका कॉपी चाहिए तो हम मुझे ये 4 चेन्स में कहाँ पे मुझे मिलेगा? वन इज दिस वन, फाइन. आउट ऑफ द 3 leftovers, where can I get the exact copy sequence of this one? इसको कॉपी मुझे कहाँ पे मिलेगा? सर वो जो ब्रेक हो के जा रहा वो वाला होगा. राइट, एग्जैक्टली. ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था पहले? ये था. ओके, तो इसके ऊपर जो भी बनेगा that will be exactly looking like same as this one. Okay, and इसके ऊपर जो भी बनेगा that will be exactly looking same as this one. Okay, so this way when we separate them, this chromosome and this chromosome has all the complete information that was there earlier. Okay, and that's how our chromosomes get replicated or get doubled up. And once the DNA content is doubled up, at the end point we have a region called as TER. TER stands for termination. Okay, so termination में क्या होता है? आपका replication terminate हो जाएगा. So this way we are going to get 2 chromosomes. Now when we are looking at the chromosomes, kindly look at the color coding. Look at here, we have dark purple. The original DNA chains are in dark purple. Okay, and we are adding a lighter version of the same color, which indicates a newly synthesized chain. So as the replication bubble proceeded and as the replication bubble split up, you can see that now we have 1 old chain and 1 new chain. Same way we have 1 old chain and 1 new chain of DNA, right? So when these chromosomes are separated, you see that half of the original content is retained. ये ओरिजिनल कंटेंट है, इसमें से आधा एक क्रोमोसोम में रिटेन हुआ है और आधा दूसरे क्रोमोसोम में रिटेन हुआ है. Okay, and for this purpose we call such kind of a replication as semi-conservative method of replication. Semi-conservative. Conservative means we are retaining the same material, but semi means we are partially retaining some material, not completely. Okay, so how much percentage are we retaining? We are retaining 50% here of the old content and 50% of the another old content is retained here, and hence this kind of a replication is called as semi-conservative method. So now once these chromosomes are formed, then comes the process of segregation. Okay, we have two chromosomes now. DNA is doubled up, the number of the chromosomes are doubled up. We have 2 chromosomes. Now the chromosome along with other cellular content will segregate. Okay, they move away. So they take help of this motorized proteins, and these motorized proteins will be moving the contents away. So while they move the contents away, the cell membrane starts to invaginate. Invaginate मतलब वो अंदर की तरह move होगा. So the lipid membrane is pulled in from both the sides, and at the point of interjunction, the membrane splits up, and this forms a completely new bacteria, and this forms a completely new bacteria. So here what we are doing, we are splitting it up. So the process is fission, and after the split, every time we get 2 cells, and hence binary. So binary fission नाम क्यों रखा है? Same simple thing. We are splitting one particular cell into 2 every time. As it is split, we call it as fission, and as we are only getting 2, we call it as binary. So the term binary fission applies to bacterial division. Okay, now let's look at the composition and let's look at the features of this bacteria. Let's say this was the parent, and let's say these are the daughters. So if you are going to keep all of them together, you can't identify who's the parent or who's the daughter. Okay, they look same. The parent looks same as the daughter. Of course, the parent will not be available because the parent itself is splitting. But when you want to compare with the parent and the daughter, they will be same. Okay, and even when you want to compare these 2 daughters, you can't identify. They are like clones. Okay, they are like clones. So clone matlab in all the aspects they are very same. They are similar. You look at the chromosome, you look at the other content of the cell, you look at the membranes, you look at the shape. In every aspect they match. Okay, so they are identical genetically, structurally, in all aspects. So they act like the clone. Okay, so हम movies में देखे होंगे कि you see this Amitabh Bachchan's son will be Amitabh Bachchan again. Okay, and that usually we don't see that kind of a thing in the regular conditions. Okay,
but movies में ऐसे देखेंगे. So this is the correct example to demonstrate that kind of a picturization. Okay, let's say this has a face of Amitabh Bachchan. So these two also will have face of Amitabh Bachchan, and the kids that are going to come from these two also will have face of Amitabh Bachchan. So this way, when the bacteria divides and divides and divides and divides, they are going to produce many bacteria with the face of Amitabh Bachchan. Okay, I mean to say they clone up pretty fast, and then they have all the similarities. So starter का जो structural and functional attributes था, everything is repeated in a perfect 100% manner. Okay, so this is all about your prokaryotic cell division. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछिए. If anyone has any doubts till here, let me know. Sir, speed of cell division differs with different bacteria. It differs with the different bacteria. Number one, and depends because we are seeing that the bacteria are forming something called as a chromosome, right? But let's say a bacteria has a DNA of around like 1,000 bases. Let's say another bacteria has a DNA of around like 2,000 bases. Let's say another bacteria has a DNA of around like 10,000 bases. Okay, so what DNA length एक factor होता है, number one. Okay, that's a major factor. And number two, some of the bacteria has more than one number of chromosomes. Okay, so it's all with the duplication time. Okay, so it differs from bacteria to bacteria. But however, if you're going to look at the division, binary fission division process, usually under optimal conditions, it takes 40 minutes. Okay, on an average, in most of the bacteria, the division time is 40 minutes. But if the conditions are too favorable, you are providing good amount of salt, good amount of sugars, and temperature and everything is good, then the division happens at a very, very fast rate. Okay, it can even happen at the rate of 15 minutes also. So the division time can get halved, or even it can happen less than the half time. Okay, so it varies depending upon the condition the bacteria is staying, and it depends upon the bacteria also, what kind of bacteria we are looking at, and what is the length of the DNA that they have. Okay, so this is all about your so-called prokaryotic cell division. Eukaryotic cell division. Yeah. Sir, वो DNA replication में आप बोल रहे थे ना कि 50% of the characteristics of the old chromosome is retained, वो वाला part में जब division हो रहा है, final जो termination हो रहा है, वो वाला और एक बार समझाएंगे. Okay, sure. Okay, you just look at the colors here. Okay, are these colors clear? आपको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Okay, let's say these are our parents. Okay, let's say we have two parents which are indicated as dark purple. Okay, and when the replication is starting, let's say our new synthesis material is indicated as a different color. Okay, so when the replication begins and when the replication ends, we can see that the original DNA chains that we had earlier, okay, in a single chromosome. A chromosome may we have these two dark colors, but by the end of the division, we are seeing that both of the chromosomes have one new and one old DNA chain. Okay, here we have one old and one new DNA chain. Here we have one old and one new DNA chain. Okay, and this way when we are looking at the end of the replication, okay, we are having a 50% of the old material and 50% of the new material. This will become one chromosome. Same way we have 50% of the old material and 50% of the new material. This will become another chromosome. Okay, so we are conserving our DNA, but it's not. We are conserving our DNA, but it's not exactly 100% conservation. It's 50% of the conservation. Okay, because old chains में जो आधा था वो सिर्फ आधा ही जा रहा है. Okay, we are not taking the full 100% of two dark strands. We are getting one dark strand and one light strand. Same way we are getting one dark chain and one light chain. Okay, so because of this reason we call it as semi-conservative.
Okay, we are conserving it, but it is semi. It's not full conservation. It's semi. It's half the conservation of the original chromosome content. ये ओरिजिनल क्रोमोसोम कंटेंट है, ये डिवाइडेड क्रोमोसोम कंटेंट है. तो डिवीजन होने के बाद we are not seeing the conservation in a full manner. We are seeing it in a divided manner or distributed manner, and hence we call it as semi-conservative. Got it? Yes, sir. Okay. Any other queries? Sir, Yeah. so can you please again explain the DNA polymerase? DNA polymerase. Yes, sir, its function. Yeah. See, polymer का job क्या होता है? Polymer is nothing but it's a large arrangement of compounds, right? So what are we arranging here? We are arranging a bases, nucleotide bases, right? I'm saying nucleotide, which means we have a sugar, we have a base, and we have a phosphate also. So I am building a polymer of DNA here, right? So whenever you want to build a polymer of DNA, the enzyme that does the job is DNA polymerase. So what does it do? It depends upon the parental chain, and according to the complementary base available there, it will add the base here. If you have a G here, you will have a C here. If you have a T here, you will have a A here. If you have C here, you will have a G here. Okay, ये complementary basing हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे DNA के स्ट्रक्चर में. Okay, so whatever the bases are available here, according to that, the bonding pattern is decided by the DNA polymerase from the space, from the nucleosomal space of plasm available. We are going to, I mean, in case of eukaryotes, it's nucleoplasm. In case of bacteria, it's cytoplasm. Okay, so from the cytoplasm, the bacteria will be picking up all these things, and they will be adding accordingly. So who's doing the job? The job is done by an enzyme called DNA polymerase. Okay, we are building the polymer of DNA, and the enzyme is polymerase is doing the job. As it is a DNA molecule, we are calling it as DNA polymerase. So from where does it do the job? From starting of the primer. Primer एक छोटा सा stretch है. It's hardly like 10 to 30 bases only. Okay, and rest of your million bases will be added by your polymerase only. Okay, so your entire synthesis and elongation and completion is taken care by your DNA polymerase. Okay, except for the beginner and the starter, बीच में जितना भी ज्यादा process होता है, that is entirely done by your DNA polymerase. Okay. Okay, sir. Yeah. Any other queries? Fine. If there are no other queries, thank you all. We will meet again in the next class. Sir. Yes. आपने बोला कि DNA polymerase takes care of the synthesis and और एक कुछ बोला आपने Elongation. ठीक है सर. Synthesis and elongation of the entire DNA till the end. Okay, we have 3 steps here. One is initiation. The number 2 is elongation. Number 3 is termination. Initiation is done by primer. Okay, elongation is done by DNA polymerase. Termination is again done by the so-called TER, cited TER. Okay, we have 2 different sites. One is ORI and one is TER. ORI initiates the DNA replication. TER concludes the DNA replication. Okay, we have different factors attached to that particular regions, and these factors start the process at the same time they stop the process. Okay, so we have 2 different regions. एक रीजन में स्टार्ट होता है और एक रीजन में खत्म हो जाता है, एंड बीच में जितना भी प्रोसेस होता है वो सब DNA polymerase करता है. Okay, if there are no further doubts, you all can leave. We'll meet. Yes, 9.
510 is present. Let me just open this app. Yes. Number बता दीजिए. Last number, okay, 510. Okay. Okay, fine. Thank you all. We'll meet again. Thank in you, the sir. next- Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.